Good morning, students. Class 9. Next topic is coordinate geometry, chapter 3. In this topic, basically, we will discuss first what is the Cartesian system. So, Cartesian system. What do you understand by Cartesian system? So let us suppose we have two mutually perpendicular lines. One is this and another is this. If these are two mutually perpendicular lines intersecting each other at any point, then this point of intersection is known as origin. This one is your x, o, x dash, and this is your y, o, y dash. So when two mutually perpendicular lines x, o, x dash and y, o, y dash intersect each other at any point, then this point of intersection is known as point of reference or point of reference or origin. That is, now all the point which will lies in this two-dimension plane, which is now divided in four equal parts, every point will be measured with respect to this point. That's why this point is known as point of reference, or generally we represent or nomenclature this name point by the name of origin. So the starting point will be 0, 0. 0, 0 means इस point का जो coordinate होगा that will be 0, 0. Now x, o, x dash is known as x axis and y, o, y dash is known as y axis. Similarly, from this origin, all the point which lies on x-axis will be positive, and from O to OX dash, all the values of x will be negative. Similarly, the values of y which lies on 0 to y again will be positive, and the values of y which lies on this 0 to y dash will be negative. Now, let us suppose there be any point P in the first quadrant. Then this is the first quadrant, this is your second quadrant, this is your third quadrant, and this one is the fourth quadrant. Now, if any point which lies in the first quadrant, then let us suppose P be the any point and having coordinate x comma y. Having coordinate x comma y means if we draw a perpendicular from this point to the x-axis, and let us suppose this point is meeting the x-axis at the point M, then this OM is known as x coordinate. X coordinate, and its nomenclature is abscissa, absci double sa, abscissa, and the distance from x-axis, that is pm, is represented by y coordinate, and its name is ordinate. So if any point which lies in the first quadrant, then the coordinate of this point means if we draw a perpendicular from that point to that axis, then distance on x-axis is known as x coordinate, and distance from x-axis is known as y coordinate. The name of the first is abscissa and the second point is ordinate, and jointly these two points are read out as co-ordinate of the point P. So this is your x coordinate and this is your y coordinate.
X coordinate is lying on the positive x axis, therefore this is positive, and distance from x axis is also positive, so x and y both are positive. Now if any point which lies in the first quadrant, then x will be also positive and y will be also positive. If there is any point in the second quadrant, then x will be negative and y will be positive. If any point lies in the third quadrant, then is x and y both will be the negative, and the point is lies in the fourth quadrant, then x will be positive and y will be negative. So, when two mutually perpendicular axes intersect each other, then this intersection, point of intersection is known as point of reference or origin. Its coordinate will be 0, 0. And if any point, let us suppose P lies in the x-axis in the first quadrant, then to find the coordinate of this point, we draw a perpendicular from that point to that x-axis, and then distance on x-axis is represented by x coordinate, and distance from x-axis is represented by y coordinate. So this Px comma y is the coordinate of point P, where x is known as abscissa and y is known as ordinate. X is distance on x-axis and y is distance from x-axis. If any point which is in the first quadrant, the x and y both the coordinate will be positive. In the second quadrant, then this is the x and this is y, so x coordinate will be negative and y will be positive. If the point is in third quadrant, then x and y both will be negative, and if the point is in fourth quadrant, then x coordinate will be positive and y will be the negative. So this is the little bit reference of Cartesian system. Now please pause the video and note down. Now second point is equation of x-axis and y-axis. Equation of x-axis and y-axis. So very simple. Let us suppose these are the two mutually perpendicular axes intersecting each other at point O. Then the coordinate O will be 0, 0. This is known as XO, X days, and this is known as YO, Y days. Now we have to find the equation of x-axis, that is equation of XO, X days or equation of x-axis. X-axis का क्या equation है? So first we will consider some point. Let us suppose a point A is there on x-axis, here A, which is at the distance of 1 unit from origin. So what will be the coordinate of this point? अगर A कोई point है x-axis के ऊपर जिसकी origin से distance 1 unit है, तो distance on x-axis इस point का x coordinate कहलाएगा. तो x coordinate कितना है? 1. Now ये point x-axis से कितना distance पे है? ये तो x-axis के ऊपर ही है. It means x-axis से तो इसकी कोई distance है ही नहीं है, 0. So the coordinate of this point is 1, 0. Now let us suppose another point, that is B, and distance of this B on x-axis is 2 unit. Then the coordinate of this point will be 2, 0, because this B is lies on x-axis. Similarly, let us suppose if we take one more point which is represented by C, and distance of C, इधर देखिए distance of C from origin is 3 unit. अगर ये distance 3 unit है तो इसका x coordinate कितना हुआ? 3 और y coordinate 0. Y coordinate 0 क्यों? Because distance from x-axis, because point already lies on x-axis. Similarly, here any point A dash, this is let us suppose B dash and this is C dash. And if A dash is at the 1 unit negative direction, then this coordinate will be -1, 0.
coordinate of y will be minus 2 comma 0 and coordinate of c will be minus 3 comma 0. So by simple observation, if the any point which lies on x-axis and in right hand side, then its x coordinate will be positive and y coordinate will be 0. If any point which lies on negative x-axis, then its x coordinate will be negative and y coordinate will be 0. Now अगर हम सारे पॉइंट को क्लीनली ऑब्जर्व करें तो देखो हर पॉइंट में y कोऑर्डिनेट 0 आ रहा, because those point which lies on x-axis, those points y coordinate will be always 0. So equation of xox or x-axis is represented by y बराबर 0. तो y बराबर 0 का मतलब क्या हुआ? इक्वेशन ऑफ x-axis. सिमिलरली अगर हमें इक्वेशन ऑफ y dash और इक्वेशन ऑफ y-axis अगर निकालना है तो y-axis का मतलब दिस लाइन का. अब इस लाइन पे भी अपन कुछ पॉइंट लेके देखते हैं कि लेट अस को यहाँ कोई पॉइंट P है, दिस इज Q है एंड दिस वन इज योर R पॉइंट है. आप देखिए डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन अगर मैं 1 यूनिट मानता हूं तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,1. अगर Q की ओरिजिन से डिस्टेंस 2 यूनिट है तो ये 0,2 और R की अगर ओरिजिन से डिस्टेंस अगर 3 यूनिट है तो 0,3. बिकॉज डिस्टेंस ऑन x एक्सिस 0 है इसमें एंड डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस 1 यूनिट, देन 2 यूनिट, देन 3 यूनिट. तो देखो जो पॉइंट y एक्सिस पे है उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा. ऐसे ही अगर नेगेटिव डायरेक्शन में यहाँ कोई पॉइंट P डैश लेता हूँ और ओरिजिन से डिस्टेंस अगर इसकी 1 यूनिट है तो नेगेटिव डायरेक्शन के कारण 0,-1. यहाँ कोई दूसरा पॉइंट Q डैश है तो ये 0,-2 और यहाँ अगर कोई पॉइंट मैं R डैश लेता हूँ तो ये 0,-3. So any point which lies on y-axis, then its x coordinate will be always 0 and y coordinate will be, अगर मैं 0 से above डायरेक्शन में जाता हूँ तो y coordinate will be increases और अगर मैं 0 से नेगेटिव डायरेक्शन में जाता हूँ तो y coordinate will be decreases. So equation of y-axis will be x बराबर 0. So this is the very important article कि इक्वेशन ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस क्या होता है. इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज ऑलवेज y बराबर 0 एंड इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज ऑलवेज x बराबर 0. होप इट इज क्लियर. प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन. Now third point, that's very important again. Equation of x axis हमेशा याद रखिए y बराबर 0 और equation of y axis is x बराबर 0. Now third point, equation of a line parallel to x axis. अगर कोई लाइन जो है parallel to x axis है तो इसका क्या इक्वेशन होगा. यहाँ देखिए this is the two dimension space x o x dash and y o y dash. Now any line which is parallel to x axis, इसके लिए भी दो कंडीशन होगी. लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है लेकिन x एक्सिस के ऊपर भी हो सकती है एंड पैरेलल टू x एक्सिस है लेकिन x एक्सिस के डाउनवर्ड डायरेक्शन में. अब अपन मान के चले कि यहाँ AB कोई लाइन है जो पैरेलल टू x एक्सिस के है. इस AB पर कोई पॉइंट लेता हूं, लेट अस कोई यहाँ P है, यहाँ Q है और यहाँ कोई पॉइंट R है. इस पॉइंट P का अगर मुझे कोऑर्डिनेट निकालना तो मैं क्या करूंगा, पॉइंट P से उसी क्वाड्रेंट की x एक्सिस पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा. लेट अस को ये पॉइंट आपका M है, Q से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पर ये N है और R से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पर लेट अस को S है. अब पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखिए डिस्टेंस ऑन x एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस. अगर लेट अस को ये 1 यूनिट है और ये भी 1 यूनिट है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 1,1. आप देखो Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए Q से वापस x एक्सिस पर परपेंडिकुलर, तो डिस्टेंस ऑन x एक्सिस ये अपन 2 यूनिट मान के चले तो ये 2
और ये डिस्टेंस तो जितनी पहले थी उतनी है, तो ये कितना हुआ 2,1। सिमिलरली अगर मुझे r पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है तो r डिस्टेंस ऑन x एक्सिस 3 यूनिट एंड डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज 1 यूनिट, तो 3,1। अब देखिए p q r ऑल 3 पॉइंट किस पे लाइज कर रहे हैं, AB पर, और AB किसके पैरेलल है, x एक्सिस पर। अब देखिए पैरेलल टू x एक्सिस है, तो PQR में यूनिक कंडीशन क्या है, देखो इन सबका y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है। देखो अगर कोई भी लाइन जो पैरेलल टू x एक्सिस है तो उस लाइन के ऊपर, चाहे मैं राइट हैंड साइड में कोई भी पॉइंट लूं चाहे लेफ्ट हैंड साइड में, उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा कांस्टेंट होता है। वो y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट का मतलब कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। इसको हम क्या लिखेंगे, y बराबर कांस्टेंट। y बराबर अगर पॉजिटिव कांस्टेंट है तो इट विल बी अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, एंड y बराबर अगर कोई नेगेटिव कांस्टेंट है तो इट विल बी पैरेलल टू x एक्सिस बट इन द नेगेटिव डायरेक्शन। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस विल बी इक्वल्स टू ऑलवेज y बराबर प्लस माइनस एनी कांस्टेंट, y बराबर प्लस माइनस एनी कांस्टेंट। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ a line parallel to y axis will be equals to x बराबर plus minus any constant. So these are the equation of a line parallel to x axis and then equation of a line parallel to y axis. Please pause the video and note down. Now fourth point is location of a point in various quadrant. अगर कोई पॉइंट है जो डिफरेंट क्वाड्रेंट में है तो उसका लोकेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट लेट अस सपोज एनी पॉइंट, इसके अपन 4 केस कंसीडर करेंगे। लेट अस सपोज कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x, y है, तो इसका लोकेशन कैसे पता करेंगे। जहां लेट अस सपोज फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट P है तो इसकी लोकेशन के लिए अपन पॉइंट से उसी क्वाड्रेंट की x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर लेट अस सपोज x एक्सिस को किसी पॉइंट M पर मीट आउट हो रहा है, वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज O, जिसको अपन जनरली ओरिजिन मानते हैं 0 0। नाउ डिस्टेंस ऑन x एक्सिस x कोऑर्डिनेट है तो ये आपका x हुआ, एंड डिस्टेंस फ्रॉम x axis is y coordinate, so this is y. So OM will be equals to x positive x coordinate and PM will be equals to positive y coordinate. This is your abscissa and this is your ordinate. So this is the location of a point in the first quadrant. सिमिलरली कोई पॉइंट लेट अस सपोज सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में लेट अस सपोज हियर Q पॉइंट है, ठीक है, जिसकी हमें लोकेशन पता करना है। तो वहां से एक अपन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस क्वाड्रेंट की x एक्सिस पर, ओरिजिन से डिस्टेंस ऑन x एक्सिस लेट अस सपोज ये कोई पॉइंट आपका R है, then OR will be equals to minus of x and distance from x axis in positive direction, so this will be equals to y. So QR will be equals to minus of plus of y, so the point will be minus x comma y. This is the location of the point, that is coordinate will be minus x comma minus y. Pause the video and note down. थर्ड केस में अगर कोई पॉइंट आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है देन उसका लोकेशन कैसे पता करेंगे। सो लेट अस सपोज द पॉइंट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, then let us suppose these are the two mutually perpendicular axes x o x days, y o y days. Let us suppose here
R be the any point, then how we will find its location? उस पॉइंट से अपन क्या करेंगे, इधर देखिए, उस पॉइंट से अपन उसी क्वाड्रेंट की x एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. लेट अस सपोज परपेंडिकुलर किसी पॉइंट n पर मीट आउट हो रहा है, then distance on x axis, distance on x एक्सिस इसका x कोऑर्डिनेट होगा, तो डिस्टेंस ऑन x एक्सिस तो माइनस x के बराबर है क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन है. एंड डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस वो इसका y कोऑर्डिनेट होगा, तो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस भी क्या है, ये भी आपका नेगेटिव है, नेगेटिव x है, और ये भी नेगेटिव y होगा बिकॉज डाउनवर्ड डायरेक्शन में. सो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया बेटे, माइनस कॉमा x कॉमा माइनस y. सो एब्सिस इज आल्सो नेगेटिव एंड ऑर्डिनेट इज आल्सो नेगेटिव. ऐसे ही अगर मैं कोई पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में लेता हूं, तो लेट अस सपोज यहां कोई पॉइंट है जिसकी हमें लोकेशन पता करना, तो लेट अस सपोज ये कोई पॉइंट है आपका S पॉइंट है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे उसी क्वाड्रेंट की x एक्सिस पर. लेट अस सपोज वो M पॉइंट पर मीट आउट हो रहा है, तो OM डिस्टेंस ऑन x एक्सिस, डिस्टेंस ऑन x एक्सिस किसके बराबर होगी, x कोऑर्डिनेट, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में इसलिए ये प्लस ऑफ x होगा. एंड डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस ये किसके बराबर, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो लेट अस सपोज माइनस y. तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x माइनस ऑफ y. So first is positive and second is negative. So in this way, in conclusion, in all four quadrant, अगर कोई point first quadrant में तो दोनों positive, second quadrant में तो माइनस प्लस, थर्ड में है तो माइनस माइनस, and fourth में तो plus minus. These are the position of a point in the various quadrants. So hope you like this video. Please like it, share it and subscribe it.